हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं पेपर 6 यूपीपीएससी मेंस पेपर 6 में जो 2023 में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हाउ डज द उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 स्ट्रेंथन्स द एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट एक्टिविटीज इन द स्टेट। तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 जो है स्ट्रेंथन करती है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट एक्टिविटीज इन द स्टेट। तो ये जो पॉलिसी है जो कि 2019 में आई है, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल या उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019, ये स्ट्रेंथन कर रही है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट एक्टिविटीज इन द स्टेट। तो उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 एम्ड to boost agricultural export activities in the state through various strategies and measures। तो ये तमाम स्ट्रेटजीज और मेजर्स के तहत जो है ये उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 एम करती है टू बूस्ट द एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट एक्टिविटीज इन द स्टेट। Here are some ways in which the policy could strengthen agricultural export activities is as first is a infrastructural development. Infrastructural development. The policy likely focused on improving infrastructure related to the agriculture, such as cold storage facilities, transportation network, packaging facilities. These improvements would enhance the efficiency of agriculture export operations and reduce post-harvest losses। तो जो पहला पॉलिसी के अंदर जो पॉइंट है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस पॉलिसी में बताया गया है कि दिस पॉलिसी लाइकली टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सच एज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, पैकेजिंग फैसिलिटीज, और इसकी वजह से इम्प्रूवमेंट होगा, enhance the efficiency of agricultural export operations and reduce the post-harvest losses। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारे पास रहेगा ताकि हम अच्छे से उसको प्रिक्योर करके रख सकें तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो है वो कम होंगे। दूसरा पॉइंट जो है इसमें ये मार्केट एक्सेस। तो मार्केट का एक्सेस जो है ये होना चाहिए। कहने का मतलब जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स तैयार हो गए तो उसके लिए मार्केट होना चाहिए ताकि वो वहां पे बेचे जा सके। The policy may have included initiatives to facilitate market access for Uttar Pradesh agricultural products both domestically and internationally। तो मार्केट का जो एक्सेस है वो होना चाहिए किसानों के पास ताकि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनको हार्वेस्ट के बाद जो है मार्केट तक पहुंचाया जा सके। मार्केट या फिर जो डिमांड्स है वो होनी चाहिए। दिस कुड इन्वॉल्व नेगोशिएटिंग trade agreement, participating in trade fairs and exhibitions, promoting Uttar Pradesh agricultural products in target market। तो कुल मिलाकर के ये है कि टारगेटेड मार्केट होनी चाहिए और टारगेट मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो इजीली पहुंचने चाहिए, और ये मार्केट जो है ये डोमेस्टिकली या फिर इंटरनेशनली दोनों ही हो सकता है। तो तीसरी चीज जो है ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशन। तो जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशन होना चाहिए टू मीट द इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड एनहांस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन द ग्लोबल मार्केट। द पॉलिसी may have emphasized the importance of adherence to quality control measures and obtaining relevant certifications। This would instill confidence among the international buyers regarding the quality and safety of the products। तो कुल मिलाकर के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रिपेयर किए जाने चाहिए। चौथी चीज जो है ये प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर। तो प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर उन चीज का होना चाहिए जिसकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डिमांड है, जो एक्सपोर्ट किया जा सके उस तरीके की चीजों का जो है एग्रीकल्चर या फिर उनको उगाना चाहिए।
The policy likely encouraged the adoption of export-oriented agricultural practices by promoting the cultivation of high-value crops with export potential. This could involve providing initiatives, technical assistance, and training to the farmers to grow crops that have strong demands in the international market. तो चौथा पॉइंट जो था इसके अंदर ये कि उन्हीं प्रोडक्ट्स को हमको उगाना है या जिसकी डिमांड ज्यादा हो। पांचवी चीज जो है फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स टू सपोर्ट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स एंड एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर। To support agricultural exports and encourage investments in the sector, the policy may have offered financial assistance, subsidies, tax incentives, and others from other form of the supports. तो financial support और incentives मिलने चाहिए किसानों को to support agricultural exporters and encourage investment in the sector. The policy may have offered financial assistance, subsidies, tax incentives, and other forms of support. This would help reduce the costs associated with agricultural export activities and incentivize the stakeholders to participate in export ventures. छठवां पॉइंट जो है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो R&D होना चाहिए। The policy might have emphasized investment in research and development. The policy might have emphasized investment in research and development initiatives aimed at improving the productivity, quality, and resilience of Uttar Pradesh agricultural products. This would involve funding research projects, promoting the adaptation of innovative technologies, facilitating collaborations between the research institutions and agricultural sector. तो कुल मिलाकर के R&D के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है ये काफी अच्छे तरीके से होना चाहिए। अगली चीज जो है सातवां पॉइंट जो है कैपेसिटी बिल्डिंग। द कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स सच एज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स and skill development initiatives may have been included in the policy of enhance the capabilities of farmers, exporters, and other stakeholders involved in the agricultural export value chain. This would help improve efficiency, compliance with regulation, and overall competitiveness in the global market. So capacity building initiatives such as training programs and the skill development initiatives have been included in the policy to enhance the capabilities of farmers, exporters, and other stakeholders involved in the agricultural export value chain. This would help improve efficiency, compliance with regulation, and overall competitiveness in the global market. By implementing these strategies and measures, the Uttar Pradesh Agriculture Export Policy 2019 aimed to create an enabling environment for agricultural export activities, thereby strengthening the contribution of agriculture to the state's economy and improving the livelihood of farmers and rural communities. So by implementing these strategies and measures, the Uttar Pradesh Agriculture Export Policy 2019 aimed to create an enabling environment for agricultural export activities, thereby strengthening the contribution of agriculture to the state's economy and improving the livelihood of farmers and the rural communities. Moving to the next question, what are the key features of Uttar Pradesh Defense Industrial Corridor? तो उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के की फीचर्स क्या है? तो की फीचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर is an initiative aimed at boosting defense production in India. तो उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर is an initiative aimed at boosting the defense production in India. The key features of it are as below. तो पहला पॉइंट जो है ये जियोग्राफिकल स्प्रेड।
तो the corridor stretches across the various cities in Uttar Pradesh including अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर एंड लखनऊ। तो ये जो उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसका ज्योग्राफिकल स्ट्रेच जो है ये काफी बड़ा है, फ्रॉम अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर एंड लखनऊ। इट इज स्प्रेड इनटू सच सिटीज, अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर एंड लखनऊ। तो यहाँ पर हम मैप में देख सकते हैं कि ये अलीगढ़, फिर आगरा, फिर यहाँ पे है झांसी, ये झांसी हो गया, फिर उसके बाद ये चित्रकूट, फिर ये कानपुर और ये लखनऊ। तो 6 सिटीज के अंदर ये डिफेंस कॉरिडोर जो है ये स्प्रेड हुआ है। दूसरा पॉइंट जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। द गवर्नमेंट हैज कमिटेड टू डेवलपिंग स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर within the corridor to support defense manufacturing activities। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये डेवलप किया जाएगा। तो द गवर्नमेंट हैज कमिटेड टू डेवलपिंग स्टेट्स ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्म इंफ्रास्ट्रक्चर within the corridor to support defense manufacturing activities। This includes industrial park, testing facilities and specialized zones। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये आर्म्स प्रोडक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा और इसके अंदर क्या होंगे, इंडस्ट्रियल पार्क, टेस्टिंग फैसिलिटीज एंड स्पेशलाइज्ड जोन्स। इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट जो है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स का भी होगा, पीपीपी मोड पर इसको डेवलप किया जाएगा। तो द कॉरिडोर इज एक्सपेक्टेड टू इन्वॉल्व कोलैबोरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट, defense organization and the private sector companies। This partnership aims to leverage the strengths of both sectors to enhance defense production capabilities। चौथा पॉइंट जो है ये स्किल डेवलपमेंट। To support the workforce needed for defense manufacturing, the corridor includes provisions for skill development programs। These programs aim to train individuals in a specialized area relevant in the defense industry। तो स्किल डेवलपमेंट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पर टू सपोर्ट द वर्कफोर्स नीडेड फॉर द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, द कॉरिडोर इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। These programs aim to train individuals in a specialized area relevant to the defense industry। पांचवा पॉइंट जो है ये अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट। द उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इज डिजाइन्ड टू अट्रैक्ट domestic and foreign investments in the defense manufacturing। Various initiatives and facilitation measures may be offered to encourage companies to establish or expand their operations within the corridor। अगला पॉइंट जो है ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो efforts may be made to facilitate technology transfer, partnership between domestic and foreign companies। This could involve the transfer for advanced defense technologies to Indian companies, contributing to the indigenous development of defense capabilities। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है ये होना चाहिए। Efforts may be made to facilitate technology transfer, partnership between domestic and foreign companies। तो फॉरेन कंपनीज के साथ जो है और जो भी इंडिया के अंदर भी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनके साथ जो है ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना चाहिए। दिस कुड इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ फॉर एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजीज टू द इंडियन कंपनीज, कंट्रीब्यूटिंग टू द इंडिजिनियस डेवलपमेंट ऑफ द डिफेंस कैपेबिलिटीज। सप्लायर्स इकोसिस्टम। तो सप्लायर्स इकोसिस्टम जो है ये अच्छा होना चाहिए। सातवां पॉइंट, the corridor aims to foster the development of robust suppliers ecosystem to support defense manufacturing of ancillary industries and small medium-sized enterprises SMEs that can contribute component and services to the defense supply chain। Overall, Uttar Pradesh Defense Industrial Corridor aims to bluster India's defense manufacturing capabilities,
promote innovation, create employment opportunities, and contribute to the country's self-reliance in defense production. तो ये जो जो बातें थी, ये उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में हमने देखा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि 2023 में पूछा हुआ है. What are the key features and significance of Lower Ganga Canal system in उत्तर प्रदेश? तो लोअर गंगा कनाल सिस्टम जो है उत्तर प्रदेश में, उसके क्या क्या की फीचर्स हैं और उसका सिग्निफिकेंस क्या है. तो लोअर गंगा जो कनाल सिस्टम है उत्तर प्रदेश में, उसके की फीचर्स के बारे में हमको बात करनी है. उसके की फीचर्स क्या है लोअर गंगा कनाल सिस्टम के. तो लोअर गंगा कनाल सिस्टम in Uttar Pradesh, India, is one of the oldest and the most significant irrigation projects in the country. तो कुल मिलाकर के ये जो लोअर निचली गंगा कनाल सिस्टम जो है, नहर सिस्टम जो है, नहर तंत्र जो है उत्तर प्रदेश में, ये भारत का एक सबसे पुराने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में से है. देश के बहुत ही पुराने प्रोजेक्ट्स में से एक है. द की फीचर एंड द सिग्निफिकेंस आर एज फॉलोज. Historical significance. So the lower Ganga canal system was constructed during the British colonial era. तो ये अंग्रेजों के ही टाइम से बना हुआ था. In 19th century इसको बनाया गया था. It was one of the major projects aimed at improving the irrigation facilities in the region and boosting agricultural productivity. तो इसको बनाया गया था अंग्रेजों के टाइम पर ही 19वीं शताब्दी में, और इसको बनाया इसलिए गया था ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है उसको बूस्ट किया जा सके. वाटर सोर्स. द कनाल सिस्टम ड्रॉज वाटर फ्रॉम गंगा रिवर नियर हरिद्वार इन उत्तराखंड. तो वाटर सोर्स के तौर पर इसको यूज किया जाता है इस कनाल सिस्टम को. और ये पानी कहाँ से लेता है, तो गंगा नदी से लेता है, हरिद्वार के पास उत्तराखंड में. एंड चैनल्स इट्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कनाल्स टू इरिगेट द एग्रीकल्चरल लैंड इन द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के काफी क्षेत्रों में जो है यह पानी के सोर्स के तौर पे काम होता है, काम करता है. अगला पॉइंट जो है निचली गंगा कनाल से जो हम यूज करते हैं, दैट इज फॉर द इरिगेशन पर्पस. द प्राइमरी सोर्स ऑफ द लोअर गंगा कनाल सिस्टम इज इरिगेशन. It provides water to the thousands of hectares of farmland in the arid plains of western Uttar Pradesh. Cultivation throughout the year, facilitates cultivation throughout the year and increasing crop yield. चौथा पॉइंट जो है दैट इज नेविगेशन. तो पानी पर्याप्त मात्रा में है, तो नेविगेशन के तौर पर इसको यूज किया जाता है, नेविगेशन के लिए भी यूज करते हैं. In addition to irrigation, the canal also facilitates navigation. They serve as important waterway for transporting goods and people, thereby contributing to the region's economy and connectivity. तो एक तरीके से नेविगेबल कैनाल है ये. अगला जो है ये हाइड्रो पावर जनरेशन. So some section of the canal systems are equipped with hydroelectricity power station. These stations harness the flow of water to generate electricity, contributing to the region's energy needs. छठा पॉइंट जो है ये वाटर सप्लाई. द कनाल also serves as a vital source of drinking water for the town and the villages situated along its routes. It plays a crucial role in meeting the domestic water requirements of the region's population. सातवां पॉइंट जो है ये कल्चरल हेरिटेज के तौर पर यूज होता है, या कल्चरल हेरिटेज है हमारा, क्योंकि ओवर द इयर्स द लोअर गंगा कैनाल हैज बिकम an integral part of the culture and social fabric of Uttar Pradesh. It has influenced settlement patterns, agricultural practices, and traditional lifestyle in the region. आठवां पॉइंट जो है ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. While the canal has significantly contributed to the agricultural development and economic growth, it has also posed challenges in terms of environmental sustainability. Issues such as waterlogging, salinization, and soil erosion have been reported in some areas. तो environmental impacts भी हुए हैं इस कनाल की वजह से.
जैसे कि salinization and the water logging, salinization and the soil erosion. Overall, the Ganga Canal, Lower Ganga Canal system stands as a testament to the human ingenuity and engineering powers prowess. It has played a crucial role in transforming the agrarian landscape of Uttar Pradesh and continues to be the lifeline of millions of people in the regions. In the region. Moving to the next question, question number 4. What is the skill development scheme under the One District, One Product program of the government of Uttar Pradesh? What is the skill development scheme? What is the skill development scheme under One District, One Product program of the government of Uttar Pradesh? तो ODOP के बारे में हमको बताना है कि इसमें स्किल डेवलपमेंट स्कीम क्या है. The skill development scheme under the One District, One Product ODOP program of the government of Uttar Pradesh is aimed at providing skill development training to individuals involved in the manufacturing of the specific products identified under the ODOP initiatives. The key point about this scheme as follows. पहला है objective. The primary objective of the skill development scheme under ODOP is to enhance the skills of artisans, craftsmen, and entrepreneurs engaged in the manufacturing products specific to each district as identified under the ODOP program. तो ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर? क्राफ्टमैन, आर्टिशंस और एंटरप्रेन्योर्स का स्किल जो है वो इंप्रूव करना अंडर दिस प्रोग्राम. Identification of the product. Under the ODOP initiative, each district of Uttar Pradesh identifies one unique product. For promotion and development of these products are usually traditional or indigenous to the district and have potential of growth and marketability. Third point जो है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम. The skill development scheme provides training program tailored to the specific requirements of the artisans and entrepreneurs involved in the manufacturing of identified products. These training programs cover various aspects such as product design, manufacturing techniques, quality control, packaging, marketing, and entrepreneurship development. तो ट्रेनिंग प्रोग्राम इसमें क्या है? द स्किल डेवलपमेंट स्कीम प्रोवाइड्स ट्रेनिंग programs tailored to specific requirements of artisans and entrepreneurs involved in the manufacturing of identified products. These training programs cover various aspects such as product design, manufacturing technique, product design, manufacturing technique, quality control, packaging, marketing and entrepreneurship development. अगला पॉइंट जो है ये स्किल एनहेंसमेंट. तो by participating in these training programs, artisans and entrepreneurs can enhance their skill and knowledge, thereby improving the quality of their products, increasing productivity and expanding their market reach. तो skill enhancement होगा इससे. तो by participating in these training programs, artisans and entrepreneurs can enhance their skill and knowledge, thereby improving the quality of their products, increasing productivity and expanding their market reach. पांचवा पॉइंट जो है इससे वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. द स्किल डेवलपमेंट स्कीम aims to generate employment opportunities by empowering individuals with the necessary skill and knowledge to become self-employed or to engage in the manufacturing sector. तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा. द स्किल डेवलपमेंट स्कीम aims to generate employment opportunities by empowering individuals with the necessary skill and knowledge to become self-employed or to engage in the manufacturing sector. By promoting entrepreneurship and skill development, the scheme contributes to poverty elevation and economic growth in the state. छठा पॉइंट जो है ये है गवर्नमेंट सपोर्ट.
The government of Uttar Pradesh provides supports for implementing skills development scheme under ODOP program. This support may include funding for training programs, infrastructure development, provision of machinery and equipment, marketing assistance, and other forms of support aimed at promoting the growth of ODOP product. Overall, the skill development scheme under ODOP program plays a crucial role in promoting traditional industries, fostering entrepreneurship, and creating sustainable livelihoods in Uttar Pradesh. It aligns with the government's vision of promoting economic development at the grassroots level and harnessing the potential of local resources and talent. अगला क्वेश्चन जो है, what are the major schemes of empowerment and welfare of Divyang Jan in Uttar Pradesh? What are the major schemes for empowerment and welfare of the Divyang Jan in Uttar Pradesh? उत्तर प्रदेश के अंदर दिव्यांग जन के एम्पावरमेंट और उनके वेलफेयर के लिए क्या स्कीमें चल रही हैं? तो उत्तर प्रदेश implemented various schemes of empowerment and welfare of the Divyang Jan on the states. In the state, some major schemes are as follows. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, पहला है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना. The scheme aims to provide financial assistance and support for the self-employment ventures of the दिव्यांग जन in उत्तर प्रदेश. तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंदर जो सरकार है वो ऐसे दिव्यांग जनों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स. उत्तर प्रदेश दिव्यांग जन पेंशन स्कीम, उत्तर प्रदेश दिव्यांग जन पेंशन स्कीम. This scheme provides financial assistance in the form of a pension to person with disabilities in the state. तीसरा पॉइंट जो है ये assistive devices distribution. The government may distribute assistive devices such as wheelchairs, hearing aid, walking sticks, and prosthetic limb to persons with the disabilities either free of cost or at subsidized rate. Accessible infrastructure development. The efforts are made to make public spaces, government building, transportation, and information accessible to person with disability through infrastructural modification and provisions. तो accessible infrastructure development, तो जो भी पब्लिक सेक्टर की जो बिल्डिंगें हैं उन या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दिव्यांग जन को ध्यान में देते हुए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा इस तरीके से. पांचवा पॉइंट जो है ये समर्थ स्कीम. Under this scheme, the skill development and employment opportunities are provided to persons with disabilities to enhance their economic empowerment and participation in the workforce. तो समर्थ स्कीम जो है और समर्थ स्कीम के अंदर जो है स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज टू enhance their economic empowerment and participation in the workforce. छठवां पॉइंट जो है ये इंक्लूसिव एजुकेशन इनिशिएटिव्स. तो इंक्लूसिव एजुकेशन इनिशिएटिव्स, various programs may be implemented to promote inclusive education and provide support to students with disabilities in schools and educational institutions. सातवां पॉइंट जो है ये एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन सुगम्य भारत अभियान. एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन या फिर सुगम्य भारत अभियान launched by the government of India. This campaigns aim to make public spaces, transportation, and information accessible to the person with the disability. तो सुगम्य भारत अभियान जो है ये launched by the government of India और ये campaign aims to make public spaces, transportation, and information accessible to the person with disabilities. आठवां पॉइंट जो है ये एजुकेशन एंड द स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव. एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स. Special provisions are made for the inclusive education and skill development program to ensure access
to education and vocational training for the person with disabilities. नवा पॉइंट जो है ये अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम तो कैंपेन्स एंड इनिशिएटिव्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द राइट्स एंड नीड्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड टू प्रमोट इंक्लूसिविटी इन द सोसाइटी. क्वेश्चन नंबर 6 जो है, व्हाट आर द मेजर बेनिफिट्स ऑफ द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट. तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का जो मेजर बेनिफिट है वो क्या है. द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट situated in the northern part of India, particularly in the state of Uttar Pradesh. The expressway holds several significant benefits which are as follows. पहला पॉइंट जो है, पहला बेनिफिट जो है ये enhance connectivity. The expressway aims to improve connectivity within the eastern Uttar Pradesh and the rest of the state, facilitating faster movement of the people and goods. अगला फैक्टर जो है, अगला पॉइंट जो है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Improved connectivity can lead to the economic development by promoting trades and commerce, attracting investment, and creating job opportunities along the corridor. तीसरा पॉइंट जो है ये reduced travel time. Expressway will reduce travel time between the major cities and towns in the eastern Uttar Pradesh, contributing to the increased efficiency in transportation. चौथा पॉइंट जो है ये boost tourism. The project is expected to boost tourism in the region by providing better access to popular tourist destinations like Varanasi, Ayodhya, and Gorakhpur. पांचवा पॉइंट जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. Construction of the expressway involves the development of associated infrastructures such as service roads, flyovers, interchange, and rest areas, which can improve overall infrastructure in the region. तो infrastructure development होगा. Safety improvement. With the well-designed expressway, there are expectations of improved road safety standards, potentially reducing accidents and fatalities. सातवां पॉइंट जो है, बेनिफिट जो है ये रीजनल डेवलपमेंट होगा. The expressway could stimulate balanced regional development by bringing previously underserved areas into the economic mainstreams. आठवां पॉइंट जो है ये एग्रीकल्चरल ग्रोथ. Improved transportation links can benefit agricultural communities by better access of market, thereby potentially increasing agricultural productivity and income for farmers. Urbanization and industrialization. The project might spur urbanization and industrialization along with the expressway corridor, leading to the establishment of industrial hub and urban centers. 10वां पॉइंट जो है ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. While large infrastructure projects can have environmental implications, the expressway might also include provisions for environmental protection and mitigation measures. Overall, Purvanchal Expressway project has the potential to bring about sustainable socio-economic development in Eastern Uttar Pradesh, benefiting both the local population and the state as a whole. Question number 7. What are the main features of Uttar Pradesh Millet Revival Program? तो उत्तर प्रदेश मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम से जो है क्या बेनिफिट्स हैं? What are the main features of the उत्तर प्रदेश मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम? तो उत्तर प्रदेश मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. तो उत्तर प्रदेश मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम जो है ये राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की इनिशिएटिव है, which aimed at promoting cultivation and consumption of millet. तो मोटे अनाजों के कल्टीवेशन और कंजम्पशन को प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का ये इनिशिएटिव है. Millets are grown in small seeded grasses. तो millets are groups of small seeded grasses that are highly nutritious and resilient to the adverse environmental conditions. तो मिलेट्स जो होते हैं ये ग्रुप ऑफ स्मॉल सीडेड ग्रास होते हैं और दे आर हाईली न्यूट्रिशियस एंड रेजिलियंट टू द एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस.
The main feature of the Uttar Pradesh Millet Revival Program includes, तो पहला क्या है, promotion of millet cultivation. The program encourages the farmers to cultivate various types of millets such as bajra, jowar, ragi, kutki. This is achieved through awareness campaign, training sessions and the distribution of high quality seeds. दूसरा पॉइंट जो है ये ट्रेनिंग एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग. ट्रेनिंग एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग्स. Farmers are provided with training on modern cultivation techniques, best practice for millet farming, and post harvest management. This helps improve yield and quality of millet produce. तो ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग होगी इससे, और farmers are provided with training on the modern cultivation technique, best practices for millet farming and post harvest management. This helps improve yield and quality of millet product. Financial support. The financial assistance is provided to farmers. Financial assistance is provided to the farmers for purchase of seeds, equipment, and other inputs required for millet cultivation. Subsidies may also provide for setting up millet processing units. चौथा पॉइंट है मार्केट लिंकेज. Efforts are made to establish direct market linkages between millet farmers and consumers. This helps ensure fair price for farmers and encourage the consumption of millets among the consumers. Nutritional awareness campaign. The program includes the campaign to raise awareness about the nutritional benefits of millets. These efforts aim to promote millets as a healthy dietary option and combat malnutrition. Research and development. Research initiatives are undertaken to develop improved variety of millets that are high yielding and resilient to the pests and diseases. This helps enhance the productivity and sustainability of millet cultivation. Policy support. The government provides policy support and creates conducive regulatory environment for promotion of millets. This may include incentives such as subsidies, tax breaks, and favorable loan scheme for millet farmers. Overall, the Uttar Pradesh Millet Revival Program aim to revive traditional millet cultivation practices, promote sustainable agriculture, improve food security, and enhance the rural livelihoods in the state. अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, मेंशन द मेजर प्रॉब्लम्स एंड challenges associated with the utilization of groundwater in Uttar Pradesh. So major problems and challenges associated with the utilization of groundwater in the Uttar Pradesh. So groundwater in Uttar Pradesh, like in many parts of India, plays a crucial role in meeting the various water needs, including drinking water supply, irrigation for agriculture and industrial use. तो इन सभी कामों के लिए जो है ये ग्राउंड वाटर के ऊपर निर्भर होना पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर, और जिसके लिए पानी जो है ग्राउंड वाटर का यूज किया जाता है. Here are some key points about the groundwater in the Uttar Pradesh. पहला पॉइंट जो है ये abundance. तो उत्तर प्रदेश has significant groundwater resources due to its extensive alluvial plain formed by the Ganga Yamuna rivers and their tributaries. These plains are highly conducive to groundwater recharge and storage. Agricultural dependency. So agriculture is primary consumer of groundwater in Uttar Pradesh, with farmers heavily reliant on tube wells and bore wells for irrigation, especially in the regions where surface water sources are inadequate or unreliable. Urban demands. So rapid urbanization in cities like Lucknow, Kanpur, and Ghaziabad has led to increased demand for groundwater for domestic, industrial, and commercial purposes. However, urban
often face challenges related to the ground contamination, national and nation and depletion. चौथा पॉइंट जो है ये डिप्लीशन कंसर्न. ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज has led to the declining water table in many parts of the state, particularly in the western and the southern regions. This depletion poses a threat to the sustainability of water supply for both agriculture and drinking water. पांचवा पॉइंट जो है ये क्वालिटी इश्यूज. Groundwater quality in Uttar Pradesh is a concern in many areas due to contamination from various sources, including industrial effluents, agricultural runoff, and untreated sewage. High level of pollutants such as arsenic and fluoride have been reported in certain regions, posing health risk to the communities. छठा पॉइंट जो है ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. द मैनेजमेंट ऑफ द ग्राउंड वाटर इन उत्तर प्रदेश इज गवर्न्ड बाय द उत्तर प्रदेश ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2019. दिस एक्ट एम्स टू रेगुलेट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, promote efficient use and prevent over exploitation through measures such as licensing and monitoring. सातवां पॉइंट जो है ये टेक्निकल इंटरवेंशन, technological intervention. The state government has initiated various programs to promote sustainable groundwater management, including the promotion of drip and sprinkler irrigation, techniques to improve water use efficiency in agriculture, and the installation of rainwater harvesting system in the urban areas. आठवां पॉइंट जो है ये कम्युनिटी इनिशिएटिव. Community-based approaches such as formation of water user association and participatory groundwater management initiatives has been encouraged to promote local stewardship of groundwater resources to ensure equitable access. Climate change impact. Climate change poses additional challenges to the groundwater management in Uttar Pradesh by altering precipitation pattern, increasing temperature, and exacerbating water scarcity and variability. Adaptation to these changes required integrated water resource management strategies and adoption of climate resilient practices. Overall sustainable management of groundwater resources in Uttar Pradesh require concrete efforts for policymakers, communities, and other stakeholders to address issues of overexploitation, contamination, and depletion while ensuring equitable access and resilience to the climate change impact. अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द मेजर गाइडलाइंस ऑफ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विथ रेफरेंस टू द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट. तो उत्तर प्रदेश सरकार के मेजर गाइडलाइंस क्या हैं विद द रेफरेंस टू द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट. तो यूपी गवर्नमेंट हैज implemented several guidelines for the plastic waste management. Here are some guidelines as below. Ban on the single use plastic. दूसरा है collection and segregation. तीसरा है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. चौथा है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव्स. पांचवा है अवेयरनेस एंड एजुकेशन. छठवा है एनफोर्समेंट एंड पेनल्टीज. तो एक एक करके देखते हैं. तो बैन ऑन द सिंगल यूज प्लास्टिक्स. द यूपी गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड a ban on the single use plastics, including the items like polythene bag, disposable cup, plates, straws, etc. Businesses and individuals were required to use alternative material or face penalties for non-compliance. Collection and segregation. There were guidelines for the collection and segregation of the plastic waste at source. This involved setting up separate bins or containers for different types of plastic waste and ensuring proper segregation to facilitate recycling.
Extended producer responsibility, EPR. The government may have implemented regulations related to EPR, wherein producers and manufacturers of the plastic products are responsible for managing the post-consumer waste generated from their products. This often involves setting up collection mechanism or recycling facilities. चौथा पॉइंट जो है ये promotion of alternatives. To reduce reliance on plastic, the government may have encouraged the use of alternative materials such as biodegradable plastics, paper bags, cloth bag, etc. This could include awareness campaign and incentives for business to adopt eco-friendly alternatives. पांचवा जो है ये awareness and education. The government may have conducted awareness programs and campaigns to educate the public about the harmful effects of plastic pollution and importance of the proper management practices. This could include a school program, communities, events, and media campaigns. Chhatwa, enforcement and penalties. There may have been enforcement mechanism in places to assure compliance with plastic waste management regulations. This could involve inspections, fines, or other penalties for business, or includes or individuals found violating the rules. The guidelines are aimed at reducing the environmental impact of plastic wastes and promoting sustainable waste management practices across the states of Uttar Pradesh. It is essential for business, individuals, and local authorities to adhere to their guidelines to protect the environment and public health. अगला क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द विजन प्लान 2030 ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट with reference to the terrestrial ecosystem of the state. तो उत्तर प्रदेश सरकार का विजन प्लान 2030 क्या है with reference to the terrestrial ecosystem of the state? The SDG Vision 2030 highlights the progress of Uttar Pradesh on the Sustainable Development Goals. Goal 15 क्या है? Life on land. तो life on land protects, restore, and promote sustainable use of terrestrial ecosystem, sustainably manage forests, and combat desertification, and halt the reverse land degradation, and halt biodiversity losses. Vision Plan 2030 for terrestrial ecosystem. UP is committed to protect, restore, and promoting sustainable use of the terrestrial ecosystem in the interest of sustainable growth and inclusive development. Its vision for the sustainable growth, use of natural resources like cultivable land, forest and inland freshwater bodies, and restoration of degraded lands, forests, and water bodies for reversing environmental degradation and ensuring their availability for future generation. The state is also committed to the conservation of its rich biodiversity, natural habitat, and to arrest incursion of alien species in order to disseminate and distribute the fruit of development. The state emphasizes strengthening capacities of the agents of change both at institutional and the grassroots level. इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही रखेंगे. नेक्स्ट जो है आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी के क्वेश्चंस को. अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन. थैंक यू.